the best chocolate dessert cup in town. After you try this one, you won't go to any bakery again. This video will reveal the secrets behind the best chocolate dessert cups in town. The ingredients are written in the description. So without further ado, let's get into the recipe. But first, hello, this is Discover Munch. So first, let's make cupcakes because we will use them later. So step 1, crack 2 eggs. मैं यहाँ पर हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ एग्स के लिए, लेकिन आप एग बीटर मशीन यूज़ कर सकते हैं. Now add powdered brown sugar. It's a healthier option. You can use white sugar also. Powdered sugar बेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको शो करती है. Now half a cup of oil or half a cup of melted butter. It's your choice, but I'm adding half a cup of oil. Mix them very well. Step 3, we will use quarter cup of orange juice because I'm making orange flavored cupcakes. Now it's time to add plain flour, which is 1.5 cup. मैंने प्लेट में मेजर करके रखा हुआ था. अब हम इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. In the next 3 steps, 1 to 2 drops of orange essence and half a teaspoon of baking soda and half a teaspoon of baking powder. So ये रहा orange essence and then हम इसमें baking soda और baking powder ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. Mixing is the key to a best cake. Now finally onto the last step. Add some milk to make the cupcakes more fluffy and soft. You can add more milk if you want. Now we will put them in the cupcake liners in the next step. Now put them into the preheated oven. You can also add chocolate chips if you want. Now let's make the chocolate ganache. अब एक पैन में आप दूध ले लें और उसमें आप डालें शुगर, ब्राउन शुगर एंड देन द कोको पाउडर. जितनी चॉकलेटी आपको चाहिए गनाश या चॉकलेट का फ्लेवर आपको जितना पसंद है, देन आप इसको फ्लेम पे रखें और मिक्स करते जाएं. फिर थोड़ी देर बाद जब वो वार्म हो जाएगा उसमें मैंने थोड़ा सा और कोको पाउडर ऐड किया था. अब आप इसमें बटर को ऐड करें फॉर अ स्मूथ एंड शाइनी टेक्सचर. अब गनाश में ऐड करने के लिए कॉर्नफ्लावर स्लरी बना लें, उसको मिक्स करें और पैन में ऐड कर दें और मिक्स करते जाएं और थोड़ी देर बाद ये थिकन अप हो जाएगा. आप इस तरह से देख सकते हैं. ओह, द कपकेक्स मस्ट बी रेडी नाउ. या कपकेक्स आर रेडी. एक टूथपिक आप लें और उससे पोक करके आप देख लें whether they are done or not. Now the ganache needs to cool down. So let's wait. Now it looks ready. So to make the layers, first add 1 layer of ganache, then cupcakes, then cream, and then again cupcakes, and then ganache. Rinse and repeat. Now wait for it to cool down and enjoy. I hope कि आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी. Do like and subscribe my channel with your friends and family, and I will come again with another delightful recipe. Bye, take care.